A very good morning to all of you. Myself Anju, PGT Chemistry from Government Senior Secondary School Badwasni, Sonipat. Today I am here to discuss with you the chapter of class 11 S block elements part 2 alkaline earth metals. The name of moderator is Mrs. Anshul Singla from SCRT Gurgaon. So students, we already discussed about the first part of the chapter S block elements alkali earth metals. Today in this class we continue with the alkaline earth metals. Alkaline earth metals, before discussing it, let's brief S block elements. The elements in which the last electron enters the outermost s orbital are called S block elements. S block elements further bifurcated into two groups. Group first, alkali metals, and group second, alkaline earth metals. So today we discuss about alkaline earth metals. Group 2 elements are known as alkaline earth metals except beryllium because, as we already discussed, it is the head element and head elements are always exceptions. They form oxides and hydroxides by reacting with water that is strongly alkaline in nature, and their metal oxides are found in the earth crust, hence are regarded as alkaline earth metals. As you see in picture, the picture of periodic table shows that the S block elements include two groups, 1A and 2A. Today, here we discuss about the group second. Alkaline earth metals include the elements calcium, magnesium, strontium, barium, beryllium and radium. Here, calcium and magnesium are abundant elements. Strontium and barium have lower abundance, and beryllium is rare abundance, and radium is the rarest element because it is radioactive in nature. Now the electronic configuration, the arrangement of electrons. Here two valence electrons are present and the general configuration of this group is Ns2. As you see in the picture, the element beryllium having symbol Be and the last electron enters into 2s2. In case of magnesium, the symbol is Mg and the last electron enter into 3s2. The element calcium, symbol is Ca, electronic configuration, last electron enter into 4s2. Element strontium, symbol Sr, last electron enters into 5s2. The element barium, symbol is Ba, last electron enter into 6s2. The element radium, symbol is Ra, and the electronic configuration shows that the last electron enters into 7s2. Now, atomic and ionic radii of alkali metals. Atomic and ionic radii of members of family are smaller than corresponding member of alkali metals. The alkaline earth metals have higher nuclear charge and therefore the electrons are attracted more toward the nucleus. As a result, their atomic and ionic radii are smaller than those of alkali metals. On moving down the group, the radii increase due to gradual increase in the number of shells and the screening effect. So students, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक मेजर रोल हम स्टडी करते हैं. जैसे हम बात करते हैं बेरिलियम की. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ शेल्स आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखी, पिक्चर में देखी, तो वहां पे नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? s2 में. अगर हम कंपेयर करते हैं
अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो जो अल्कली मेटल्स का रेडियाई हमेशा ज्यादा है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, और जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं ग्रुप के अंदर तो हमारा रेडियाई क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारा किस पे बेस्ड है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, हमारे साइज पे और नंबर ऑफ शेल्स पे। अब बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an isolated gaseous atom to lose an electron in its gaseous state. So, in case of alkaline earth metals, alkaline earth elements can donate both valence electron to get a noble gas configuration of octet configuration. Thus, they have two ionization energies. First ionization energy is the energy needed for the removal of first electron from the neutral atom. It is larger than that of alkali metal atoms. Why it is larger? Because due to smaller radii and the electrons being held tightly by the higher nuclear charge. Second, electron being removed from a fully filled and hence a stable subshell. Second ionization energy needed for the second electron from the cation will be more than the first ionization energy of atom, but less than any second ionization of alkali metals. In spite of high ionization energy, removal of both electrons are feasible because atoms get a noble gas configuration. The smaller size and higher charge help to overcome the higher ionization energy by higher lattice energy arising due to the close packing of atoms in solids. Higher hydration energy in liquids due to larger solvation. So group 2 alkaline earth elements are all divalent electropositive metals, exhibit a fixed oxidation state of +2. Ionization energy needed for the removal of valence electrons will be highest for the small beryllium atom. With increasing atomic size, the valence electron gets shielded by inner electrons and become easily removable with less energy requirement. Hence, the ionization energy decreases with an increasing atomic number of atomic size. For example, ionization energy of beryllium is more than magnesium, then calcium, then strontium, and then barium. Next is hydration enthalpy. The energy released as a result of formation of new bonds between iron and water molecule is called hydration enthalpy. In alkaline earth metals, the hydration enthalpy decreases with the increase in ionic sizes. As smaller ions show higher charge density and can be solvated by more water molecules, this releases a higher enthalpy of hydration and make the hydrated ion more soluble. Solubility of barium ion is more than solubility of magnesium, then calcium, then strontium, and then barium. Hydration enthalpy of alkaline earth metals is larger than those of alkali metals. Hydration enthalpy of alkali earth metals are larger than those of corresponding alkali metals in the same period. Why? The question arises, why it is so? तो बच्चों, किसी भी पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक साइज डिक्रीज होता रहता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज अल्कली अर्थ मेटल्स से छोटा होता है। जब हम कंपेयर करते हैं दो एलिमेंट्स को, एक ग्रुप फर्स्ट में से एक ग्रुप सेकंड में से, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड मैग्नीशियम फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम का आयनिक साइज सोडियम से छोटा होगा। इफ आयनिक साइज छोटा होगा तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर के साथ पोलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमारी ज्यादा होगी। इसलिए
अगर हम आयनिक साइज हमारा स्मॉलर है, हो जाता है, अगर हमारा आयनिक साइज स्मॉलर हो जाता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी हमेशा इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, alkaline earth metals appear silvery white and are hard metals. Alkaline earth metals are denser than alkali metals because their radii is smaller. The volume of atom are also smaller. In addition, due to the presence of two valence electrons, atoms have strong metallic bonds. Hence, alkaline earth metals have more density and harder than alkali metals. Density generally increases from magnesium to radium, while calcium has the lowest density among the alkaline earth metals. जब हम बात करते हैं बच्चों मेटेलिक करेक्टर की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस मेटेलिक देन अल्कली मेटल्स. As we go down, the tendency to lose electrons increases. बिकॉज जो न्यूक्लियस का लगाव है इलेक्ट्रॉन से वो कम हो रहा है. जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी आपकी बढ़ती जा रही है. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप. अब जब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर एंड हार्डर देन कोरस्पोंडिंग अल्कली मेटल्स. डेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इक्वल होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम के. अगर मास ज्यादा है, इफ मास इज ग्रेटर देन कोरस्पोंडिंग अल्कली, साइज इज स्मॉलर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास अल्कलीन का ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी किसके इक्वल है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम के. तो मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ओवरऑल डेंसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब हम बात करते हैं फ्लेम कलरेशन की. These metals impart color when exposed to oxidizing flame due to the excitation of outermost electron to a higher energy level and then return to their ground state by emitting radiations. Calcium imparts brick red, strontium imparts crimson and barium imparts glassy green color. अब यहाँ पे भी बात आती है एक्सेप्शन की. तो जो बेरिलियम है आपका और मैग्नीशियम, वो दोनों कलर नहीं देते हैं, फ्लेम को कलर वो इंपार्ट नहीं करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों नहीं करते हैं, है तो वो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो बच्चों वो क्या है, एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, एक्सेप्शन है. वो क्यों नहीं देते हैं कलर, ये कलर इंपार्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, और उनके स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होने की वजह से जो फ्लेम से उनको एनर्जी मिल रही है उससे वो एक्साइटेड नहीं हो पा रहे हैं, और एक्साइटेड नहीं हो पा रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे. एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वहां पे आते हुए जो एनर्जी रिलीज करते थे वो नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कलर हमें कहां से मिलेगा. तो आपको बात समझ में आई, यहाँ पे भी बेरिलियम ने अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया है. नेक्स्ट इज आवर केमिकल properties. In chemical properties, first property is our reactivity towards air. Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water because of formation of oxide film on their surface, and this oxide film is of barium oxide, magnesium oxide. Still, barium when powdered form में वो हमें देता है oxides. Barium when powdered react to form barium oxides and beryllium nitrides. बच्चों जब हम रिएक्शन विद एयर के साथ या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर जब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्कली मेटल्स जो हैं बड़ा वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ. बट इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाइग्रसली रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और अगर एक बार रिएक्शन शुरू हो जाती है तो वो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं.
यहाँ पे सेकंड हमने चीज देखी काइनेटिकली इनर्ट। तो क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिकली इनर्ट? तो बच्चों काइनेटिकली इनर्ट का मतलब है इन्हें एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत हाई होती है। इन बेरिलियम मैग्नीशियम, अगर बेरिलियम हमारा पाउडर्ड फॉर्म में है तो वो रिएक्ट करेगा, एयर में बर्न करेगा और हमें बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड देगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा विद व्हाइट फ्लेम। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम रिएक्ट करेंगे, एयर के साथ बर्न करेंगे इंटेंस व्हाइट फ्लेम के साथ और हमें रेड टिंगिंग देंगे। बेरियम हमारा एयर के अंदर बर्न करेगा व्हाइट फ्लेम के साथ और हमें ग्रीनिश टिंगिंग देगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम भी ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बनाते हैं। जब केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है आपका बेरियम ऑक्साइड का, वो एम्फोट्रिक इन नेचर है, एसिड और बेस दोनों की तरह वो बिहेव करता है। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है आपका वो कोवलेंट कैरेक्टर को शो करता है। बाकी सभी जो हैं एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर आयनिक कैरेक्टर को शो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? Alkaline earth metals have lesser tendency to react with water as compared to alkali metals. They combine with water slowly to form hydroxides. Beryllium and magnesium are kinetically inert to water. Beryllium does not react with water or steam even at red heat. Calcium, strontium and barium react with water with less difficulty. Calcium, as you see in the reaction, calcium react with water and give us calcium hydroxide and dihydrogen. Like alkali metals, the hydroxides are basic in nature and strength increases down the family. तो बच्चों यहाँ पे भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं, अपना एम्फोट्रिक नेचर को वो शो करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। Beryllium does not react with hydrogen directly. Beryllium hydride can be prepared by the reduction of beryllium chloride with lithium aluminium hydride. Beryllium chloride को lithium aluminium hydride के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें beryllium hydride, lithium chloride और aluminium trichloride देता है। Beryllium and magnesium form covalent hydrides where each hydrogen is connected to two metal atoms as you see in the picture. This is an example of molecules with three centers sharing only two electrons called banana bond. In this picture you see here beryllium atoms are connected with hydrogen atoms in a shape. This is known as banana bond. Calcium, strontium and barium react with hydrogen to form metallic hydrides. Metallic hydrides give hydride ions. As you see in the picture, see in the reaction, metal react with dihydrogen give you metal hydrides and metal hydrides then give you hydride ions. Hydrides react violently with water to release hydrogen. Calcium hydrides called hydrolith is used for producing hydrogen. In reaction you see here calcium hydride react with water gives you calcium hydroxide and dihydrogen. All the elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form their hydrides, metal hydrides. बेरिलियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं। बेरिलियम का हाइड्राइड बनेगा या नहीं क्वेश्चन अराइज होता है। तो बेरिलियम भी हाइड्राइड बनाता है। बेरिलियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जैसा कि आपने रिएक्शन में अभी अभी देखा। यहाँ पे भी जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है, स्ट्रोंशियम भी हाइड्राइड बनाता है और बेरियम भी हाइड्राइड बनाता है। लेकिन जो नेचर है मैग्नीशियम का वो कोवलेंट रहेगा और बाकी सबका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो नेचर है वो आपका रहेगा आयनिक। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी रहेगी? सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हैलोजेंस एट evaluated temperature forming their halides. Alkaline earth metals from calcium to barium
react with all halogens to form solid ionic halides with a definite crystal structure. Reactivity decreases from fluorine to iodine. Fluorine and iodine, ये क्या है? Fluorine, chlorine, bromine, iodine are halogens represented by X. Beryllium halides are an exception with more covalent bonding because of the high polarization of small covalent ion on the electron cloud of the halogen anion as indicated by Fason's rule. In the gas phase, beryllium halides exist as individual molecules, and in the solid phase they form chain of beryllium halogens. In solid state, you see in the picture a polymer of beryllium chloride is there and they form a chain of beryllium and halogen is chlorine. Beryllium chlorine chain is available here in solid state. Fluorides are insoluble in water. The solubility of other halides decrease with increase in ionic size from magnesium ion to barium ions. Halides are hygroscopic and have the water of crystallization in their solid state. They form calcium chloride with 6 water molecules. Fused halides are used as dehydrating agents. यहाँ पे भी बच्चों बेरिलियम अपना थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. बेरिलियम्स के जब हाइड्राइड्स बनते हैं, बेरिलियम हेलाइड्स जब यहाँ बनते हैं तो हाई टेम्परेचर में हीट करने से बनते हैं. जब हाई टेम्परेचर में उसे हेलोजन के साथ हीट किया जाता है तो वो बेरिलियम हेलाइड्स हमें देता है. बेरिलियम हेलाइड बिहेव यहाँ पे भी डिफरेंटली करता है, कोवलेंट नेचर को शो करता है. बेरिलियम क्लोराइड्स का आपने अभी यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर देखा सॉलिड स्टेट में. मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हेलाइड बनते हैं और मैग्नीशियम हेलाइड होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड साथ में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स. कैल्शियम देता है कैल्शियम क्लोराइड साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. स्ट्रोंशियम देता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और बेरियम देता है बेरियम क्लोराइड साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. टेंडेंसी टू फॉर्म हेलाइड हाइड्रेट also decrease down the group. Now, the reducing nature in case of alkaline earth metals. Reducing ability is inversely related to ionization energy as we discussed already in alkali metals. As ionization energy decreases down the column, reducing property is expected to increase from barium to beryllium. Reduction potential also decrease in same order, indicating the increasing reducing capacities. But the alkaline earth metals are weaker reducing agents than alkali metals due to higher ionization energies. Next is our solution in liquid ammonia. Like alkali metals, alkaline earth metals also form ammonia solvated cations and electrons. The solution is electrically conductive, reductive and paramagnetic. The solvated electrons absorb in the visible region and the solution turn blue in color. The concentrated solution is bronze in color. On long standing, it decomposes into amide, ammonia and hydrogen. Now, the carbonates and bicarbonates in case of alkaline earth metals. The carbonates of alkaline earth metals can be prepared by passing carbon dioxide in limited supply through the solution of their hydroxides. As you see in the reaction, metal hydroxides plus carbon dioxide gives you metal carbonate and water. Calcium hydroxides with carbon dioxide gives you calcium carbonate and water. Two reactions are shown here. Metal hydroxides and calcium hydroxides. Bicarbonates are soluble in water and exist only in solution. Carbonates exist as solid and insoluble in water. The solubility of carbonates decreases from beryllium to barium. In the presence of carbon dioxide, carbonates dissolve by forming bicarbonates. Ionic character and the thermal stability of carbonates increases from beryllium to barium. Now, the sulfates. Contrary to alkali metal sulfates, beryllium sulfate is water soluble.
Smaller the size and the charge density increase the hydration energy of beryllium sulfate, leading to more solubility. In other sulfates, increasing lattice energy and the decreasing hydration energy due to increasing size decrease their solubility from beryllium sulfate to barium sulfate. So, the solubility of beryllium sulfate is more than magnesium sulfate, then calcium sulfate, then strontium sulfate, and then barium sulfate. In case of nitrates, nitrates can be prepared by reacting the corresponding oxides, hydroxides and carbonates with nitric acid. On heating nitrates, they give us oxides, liberating brown fumes of nitrogen dioxides. Metal nitrides are shown here, gives you metal oxides plus nitrogen dioxide plus dioxygen. Now, the anomalous properties of beryllium. Anomalous means anomalous behavior of an element refer to the deviation of properties and behavior of an element from its usual or normal behavior. It is due to the following reasons: exceptionally small size of its atoms and ions, and second, high polarizing power. Polarizing power means charge mass radius ratio. The anomalous behavior of beryllium is as follows. It is the hardest metal among alkaline earth metals. It is the hardest among their group, all metals of their group. Does not react with water even at red hot conditions. Melting and boiling point of beryllium is maximum. It does not react directly with hydrogen to form hydrides. Unlike other alkaline earth metals, does not liberate hydrogen from acid because of higher electrode potential. Beryllium oxide and hydroxides are amphoteric in nature, dissolved in acids to form salts and in base to form berylate. Beryllium forms carbide of a different formula and yield methane and not acetylene like other metals on reaction with water. Beryllium nitride is volatile. It does not react with amphoteric nitrogen and oxygen. This is the anomalous behavior of beryllium from its group. Now, the diagonal relationship of beryllium with aluminium. As we already discussed in alkali metals, some of elements show the relationship with the other group elements. Here, beryllium have a diagonal relationship with aluminium. Both have comparable ionic radius, hence show diagonal similarities. Both are not readily attacked by acid because of the presence of oxide film on the surface of metal, which is made up of their oxides. Halide of both are polyvalent, bridged and of low melting points. Halides are Lewis acids. Oxides and hydroxides of beryllium and aluminium are amphoteric in nature, so they react with acid as well as base. Both of them don't react with water even at high temperatures. Both form polyvalent bridge hydrides of covalent nature. Water hydrolyzes both nitrides, liberated ammonia. Carbonates of beryllium and aluminium are unstable. Both show strong tendency to form complexes. Calcium oxide, known as quicklime. Preparation. Calcium oxide is prepared, it is known as limestone. It is known as lime, quicklime it is prepared by limestone on heating at 170 to 1270 Kelvin in a rotary kiln, decomposes to evolve carbon dioxide and form a quicklime. As you see in the reaction, calcium carbonate give us calcium oxide and carbon dioxide, and calcium oxide is known as quicklime. Properties. It is white amorphous solid with melting point of 2870 Kelvin. On exposure to air, it absorbs carbon dioxide and moisture, forming calcium carbonate and calcium hydroxides. Being a basic oxide, it combines with acidic oxides like silicon dioxide. Its uses are primary material for cement manufacturing, purification of sugar in manufacturing of dye stuffs. Calcium hydroxide. It is the next compound of these elements.
Its preparation is calcium oxide, known as quicklime, reacts exothermically with water to form a calcium hydroxide, known as lime water or slagged lime. The structure is shown in the picture. You see here, calcium is combined with two OH groups. Calcium oxide with water gives you calcium hydroxide. Its properties are, it is a white amorphous solid which is strongly soluble in water. Its aqueous solution is known as lime water, and a suspension in water is known as milk of lime. On passing carbon dioxide, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. But with excess of carbon dioxides, the precipitate dissolves to form calcium hydrogen carbonates. Its use are preparation of mortar, building material. In whitewash, it is used in disinfectant. It is used in glass making, tanning, sugar purification, bleaching powder, and in preparations it is used. Next compound is calcium carbonate. Its preparation is from salt lime. It can be prepared by passing carbon dioxide through salt lime in limited amount. Secondly, from calcium chloride, it can be prepared by adding aqueous solution of sodium carbonate to calcium chloride. Its properties are, it occurs naturally in many forms as marble, limestone, chalk, coral, calcite, etc. It is almost insoluble in water. Calcium carbonate on heating at 1200 Kelvin decompose to evolve carbon dioxide and form quicklime CaO. Calcium carbonate gives us calcium oxide and carbon dioxides. Reacts with dilute acids to liberate carbon dioxide. Its uses are as flux in iron extraction, in building material, for high quality paper production, antacids, abrasive in toothpaste, in chewing gum, or as a filler in cosmetics. Calcium sulfates, known as plaster of Paris. The structure is shown in picture. Preparation, naturally available gypsum, calcium sulfate with 2 water molecules, when heated at 393 Kelvin, produces a hemihydrate of copper sulfate popularly. As you see the reaction in the picture, calcium sulfate with water molecule known as gypsum at 60 degree Celsius gives us hemihydrate calcium sulfate with half water molecule. At 105 degrees Celsius it gives us anhydride calcium sulfate. Its properties are, it exists in monoclinic crystal structure. On heating above 393 Kelvin, anhydrous copper sulfate is formed, known as dead burnt plaster. Uses, it is much used in decorating surface. Decorating monuments are prepared from these material. मेकिंग फॉल सीलिंग जो हमारे घरों में होती है, आप लोगों ने भी करवाई होगी, देखी होगी. और इन सर्जिकल ट्रीटमेंट और इन डेंटिस्ट के पास भी हम इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं. बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, activity of enzymes. Magnesium play a crucial role in the biochemical reaction occurring in our body. Act as a fuel source. It play an important role in the production of energy within the cell. Without the sufficient supply of these iron, nutrients cannot be converted into usable energy. Protector of human DNA. DNA synthesis is not possible without the sufficient supply of this iron. It is responsible for the stability and proper functioning of DNA. It is the central atom present in chlorophyll, plant pigment necessary for photosynthesis. It is a cofactor for the breakdown of fats and glucose. About 99% of bones are made up of calcium. Calcium is a significant for blood coagulation, cell membrane integrity, interneuronal transmission, calcitonin, and parathyroid hormones. Now, students, we complete the alkaline earth metals, about their physical properties, their chemical properties, their compounds, about their reactivities, their chemical reaction, their formation, we discussed in this class. So now the time for assignment. The first question for you is, discuss the solubility and thermal stability of sulfates of alkali earth metals.
The second question is, why are barium sulfate and magnesium sulfate readily soluble in water, while calcium sulfate, strontium sulfate and barium sulfate are insoluble? Answer is also provided to you, but we discuss it in next class. Why do beryllium and magnesium not impart color to the flame in the flame test? As we discussed today, beryllium and magnesium, beryllium is the head element and it shows exceptional behavior. So you will answer these questions by going through the lecture we delivered today, we discussed today, and hope so आप सब कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो we will discuss it in next class. Thank you.